Hello everyone, I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now focus on this question. So, question में क्या है? हमारे पास एक cylinder है, then we have a plank and there is a person who is trying to move this cylinder by applying force on the plank, and this horizontal force acting on the plank is F. Okay, and then this is said that there is no slipping at any contact. अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब होता है? सिंपल मीनिंग ये है कि एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन. So whatever is the acceleration of plank at this point and cylinder at this point has to be equal. Then only relative acceleration will be zero, right? And here also the same thing. Whatever acceleration is of ground at this point will be of cylinder at this point. Then only relative acceleration will be zero. Similar thing will get applied to the velocity. ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो नो स्लिपिंग हो रहा है इसका मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे सर्फेसिस के बीच में फ्रिक्शन मस्ट बी एक्टिंग. यस, देर आर केसेस जहां पे तुम्हारा फ्रिक्शन ना लग रहा हो, देन ऑल्सो नो स्लिपिंग कैन हैपन, बट इन दैट केस फ्रिक्शन को रिप्लेस करने वाला सम स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी ओवर देयर, विच इज नॉट द केस ओवर हियर. सो यहाँ पे सिंपल हम फ्रिक्शन मानेंगे इस सर्फेस पे भी और यहाँ पे भी. ठीक है, नाउ व्हाट एल्स इज सेड? We are asked to calculate things, right? Acceleration of center of the cylinder, friction force between plank and the cylinder. देखो यहाँ पे friction की बात भी हो रही है. So we have to talk about what is the friction acting over here. So एक चीज ध्यान से अगर हम समझे तो मोशन कैसा होगा इस सिलेंडर का? इट विल बी डेफिनेटली रोलिंग, राइट? सो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन. क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रांसलेट तो डेफिनेटली करेगा, और अगर सिर्फ ट्रांसलेट करता है तो इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, and relative acceleration of this point with respect to ground has to be zero, right? Which is not possible if body is simply translating. So body has to rotate also. So rotation plus translation, this is case of rolling. But it will be pure rolling if I mean जब body के पास दोनों ही motion है, we will say this is rolling. But pure rolling का case क्या होता है? When at contact points it is having no relative motion, then we will say the case is pure rolling. So यहाँ पे जो केस है वो pure rolling का है, क्योंकि इस contact point पे भी relative velocity acceleration zero है, here also it is zero because no slipping case is given. ठीक है, सो चलो अब केयरफुली हम क्या करते हैं, फोर्सेस को लिखते हैं. सो प्लैंक की अगर आप बात करो, प्लैंक विल हैव ओनली ट्रांसलेशन मोशन. सो इस पे फोर्स लगा F, क्योंकि आप ध्यान से देखो इस पे mg इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ बीइंग इन कांटेक्ट विद द सिलेंडर in this direction, and this force F, I mean ये rod काफी plank काफी thin है, right? So this force is passing through this center of mass thing, so there is no torque acting on this plank, right? So this will simply translate. और अगर आप ट्रांसलेशन के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे, और कोई फोर्स है क्या? देख लो ध्यान से, यहाँ पे if the person is applying force like this, it will resist the motion. Why? Because there is friction over here. So friction will apply in this direction and it will try to stop the plank from moving. Done it? And even in that case, if it is moving, it means friction is not that much capable. Let's say this plank has acceleration of AP, and you will be writing equation as F minus friction. Let's say this is F1. F1 is equal to AP, MAP, right? So it is this. दिस इज वन इक्वेशन. अब आप एक काम करो, इस सिलेंडर का लिखो. सो F1 का रिएक्शन फोर्स विल बी ओवर हियर, एंड द मोमेंट दिस F1 is acting on this cylinder, torque of this around center of mass we can see, right? R cross F. So this torque will try to rotate this cylinder in the clockwise direction, and because of that, this point in contact with the ground will try to go in this direction. So friction at this surface, at this contact point, will operate in this direction. ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर भी नहीं होता है रोलिंग मोशन में, देन यू कैन गिव एनी रैंडम डायरेक्शन टू द फ्रिक्शन. I mean अगर आपने गलत दिया है, आंसर विल बी नेगेटिव, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट स्टिल इफ यू कैन I mean guess the direction, it is better you do that. So here we have done it, and this is the force, these are the forces acting, right? So F1 plus F2 will be equal to m into acceleration of cylinder. Let us say this is A. Then another equation we can write for rotation, क्योंकि यहाँ पे टॉग लग रहा है अराउंड सेंटर ऑफ मास, राइट? सो यहाँ पे आप टॉग लिखो, F1 का टॉग क्या होगा? F1R, दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस इज F2R. ठीक है, so F1R will dominate F2R, I would say. Why? Because first of all, this F2 thing originated because F1 thing acted over here, so this is in reaction to this one. So I will say जिसने रिस्पॉन्स निकाला है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, आई वुड से.
आई मीन इवन इफ दैट इज नॉट, इक्वेशन में आपको दिख जाएगा फाइनल आंसर में, ठीक है। सो फॉर नाउ आई विल से दैट दिस थिंग, आई मीन ये जो सिलेंडर है इट विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन, सो आई एम टेकिंग दिस टॉर्क स्ट्रॉन्गर देन दिस वन। mg का टॉर्क 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। नॉर्मल रिएक्शन एट बोथ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स विल I mean pass through its center of mass, so yeah, we will say its torque around center of mass is 0. So net torque आप लिख लो F1R plus F2R, and this is equal to how much? I alpha. Since this is cylinder, its moment of inertia is mr square by 2. So we are getting 3 force and torque equations, right? 2 force equation, 1 torque equation. Done है? और हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे F1 plus F2 को आप लिख लेना I alpha by R. Now we can write constraint relation also. I mean at this point, body is not slipping, right? So no slipping meaning whatever is the acceleration of this whatever is the acceleration of this cylinder at this point will be equal to the acceleration of ground at this point. और ground तो तुम्हारा rest में है ना, so acceleration of this point of cylinder because of translation and rotation has to be equal. So आप देख लो, अगर net force हमारा इस direction में था, so A is in this direction because of translation. So because of translation, each point will have same acceleration. So this also in this direction A. And because of rotation, it is rotating in this direction. Acceleration will be tangential equal to alpha r. So here it is in this direction, alpha r. And A minus alpha r should be equal to acceleration of ground, which is equal to 0. So A equal to alpha r. Okay? This is one condition. Second one is that here also there is no slipping happening. It means at this point, whatever is the acceleration of Planck will be the acceleration of point on the cylinder. ठीक है, so इस point का acceleration क्या होगा? Because of translation it is A, because of rotation it will be in this direction only, like ऐसे tangent बनाओगे इसी direction में जाएगा alpha r. So A plus alpha r should be equal to how much? AP. Then only relative velocity acceleration will be 0, right? So this is this. अब आप लिखो यहाँ पे अल्फा आर को ए लिख सकते हो, सो ए पी इज इक्वल टू 2a. नाउ वी आर डन विद दिस थिंग, राइट? अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम सारे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू एम ए पी, सो आई विल राइट 2ma, एंड देन वी वर सॉरी f sorry this is your f minus f1, right? So Planck के लिए लिख रही हूँ f minus f1, and then it was f1 plus f2, it is equal to mass into acceleration. ठीक है, and then another equation was there, f1 minus f2, that was right. यहां से देख लो, I mean टॉर्क था ना, इसको माइनस नहीं किया हमने, अरे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, वन इज क्लॉकवाइज अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज, वी नीड टू सब्सट्रैक्ट इट, राइट? सॉरी यार, दिस शुड नॉट बी रिटन लाइक दिस, क्योंकि मैं बार बार डायरेक्शन तो दिखाया लेकिन यहाँ पे प्लस कर दिया, विच इज नॉट करेक्ट, राइट? सो f1 माइनस f2 इज इक्वल टू आई अल्फा बाई आर. अब आप यहाँ पे लिख दो f1 minus f2 is equal to I alpha by r. ठीक है, सो दिस इज दिस. अब आप i का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज योर एम आर स्क्वायर बाई 2. अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज a बाई आर. सो यहाँ पे a बाई आर लिखो, सो आर स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसल्ड, एम ए बाई 2. सो f1 minus f2 is equal to how much? ma by 2. Let us call this equation 1. Let us call this equation 2. Add equation 1 and 2. If you are going to add it, you will be getting 2f1 is equal to 2f1 is equal to 3ma by 2. Then we have another equation, which is this one. Let us call this equation third. So if you put the value of f1, the one we have got just now, we will be able to get the value of acceleration. So fast off rakh do, f minus f1 is equal to how much? 3ma by 4, and this is equal to how much? 2ma. Okay, so this is this. अब देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन कॉमन ले लो आप, 3m by 4 plus 2m. So this will be equal to how much? F is equal to a 3m plus 8m divided by 4. So acceleration is equal to how much? 4f divided by 3m plus 8m. Done it? This is going to be your answer. I hope you have got it. Second चीज भी हमें निकालनी थी, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन प्लैंक एंड द सिलेंडर. सो F1 का वैल्यू क्या है देखो, 3ma by 2.
Sorry, 2f1 is 3ma by 2, so f1 is 3ma by 4. So f1 is equal to 3m by 4 into a, that is 4f divided by 8 small m plus 3m. So this will get cancelled and you will be getting 3mf by 8 small m plus 3m. This is your f. I hope you have understood this concept. I hope you are able to, interpret it properly. But if you have doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye. And keep on solving more number of questions. Bye.